Hi guys, my name is HEENA ARORA and I am a maths faculty. I have an experience of more than 9 years and I can teach in both the languages, Hindi and English, and I can use English as well. So today's topic is number system. But guys, before moving on to some chapter, I just want to tell you that first we should know the meaning of the chapter, and prerequisite knowledge is also required. Like for moving on to some other chapter, we should be having a little bit idea, we should be having some little bit knowledge, like prerequisite knowledge जिसे कहते हैं pre-required knowledge. So अभी तक till date, see, if you are studying maths, so you are aware with the real number system. Real numbers. You must have studied real numbers. I'll just brief you out. Real numbers. Okay. Now see, what do you mean by number system? This numbers 1, 2, 3, -1, -17 by 99, any number ka system. Okay, so in this chapter we'll study what are real numbers. Halaki we have already done, like this is not new for us, that what are real numbers, what are natural numbers, what are whole numbers. This is not new for us, but in this chapter we will do rational numbers and irrational numbers. I'll just give you the new definition of rational numbers and irrational number, and that is very much apt to one. So as I said, before going on to the chapter or before going on to some new concept, we should be having some prerequisite knowledge. So for that, I'll tell you what are real numbers. This is just we are recapitulating, just we are revising. So what are real numbers? What are whole numbers? You must have done these things. आप लोगों ने ये चीजें already कर रखी होंगी. Whole numbers, natural numbers, okay, integers. Now see, real numbers, it is having two parts, rational numbers, few will be rational numbers, few will be irrational numbers. Okay, देखो real number, any number which is having, which is real, like आपकी जो real number line होती है, as you guys know, it is 0. On the right side of the 0, all the positive numbers are there, 1, 2, 3 up to infinity. It is on the left side, it is -1, -2 up to so on minus infinity, and here it is infinity. Now see, this is real number line. Okay, between 0 and 1, between 0 and 1 or any two consecutive numbers, there are infinite numbers between 0 and 1. So real numbers are infinite, like you can count. Okay, I'll just give you the flow chart of this. This is just the introduction, what we are going to do in this chapter. Introduction, we'll do representation of rational numbers, representation of irrational numbers. What are the, how we can see that it is a rational number, how we can say or why we will say that a particular number is a rational number. So everything we are going to do in this chapter. This is something. See, real numbers. Q is a set of rational numbers. Inside, see, inside real numbers के अंदर ही rational numbers है. Rational numbers के अंदर ही हमारे integers हैं. Like ये मैं आपको सब parts, subsets जिसे बोलते हैं हम लोग. और W is a part of
or is a subset of Z. N is a subset of W. W is a set of whole numbers. N is a set of natural numbers. These are, abhi I'm going to tell you what I am going to do. See now, the set of whole numbers. W is represented for the, or representation for set of whole numbers. Z is the set of integers. As I said, Q is the set of rationals. R is the set of real numbers. Guys, this one chart is very much, is apt to tell you. Now see, numbers, as I said, numbers क्या होते हैं? It can be any number. It can be a real number. It can be an imaginary number. Right now, we don't want to go into the complex number, but मैं आपको एक बार complex number की बता देती हूँ. किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. It is of the form a plus iota b. Iota. Now iota is what? Iota square is equals to -1. As we guys know कि any square can't be the negative one. तभी हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अलग सेट ऑफ नंबर्स इनको रिप्रेजेंट कर दिया है. दिस थिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू विल स्टडी इन योर 11th क्लास इन डिटेल. यू विल डू जब व्हेन यू विल डू द क्वाड्रेटिक equations you will do, no? So in that also you will do a little part of complex numbers. Right now I don't want to go into the complex numbers. Right now for this chapter only, real numbers are sufficient for us. So just I have given the definition for this, ki why I am not going into this complex numbers. Complex numbers are of the form a plus iota b, where iota square is -1. As we guys know, square can't be negative, so that is why we are keeping it a little bit aside right now. Numbers, real numbers, imaginary numbers. Now see, real numbers में rational numbers भी होते हैं, irrational numbers भी होते हैं. अब rational numbers किस तरीके के होते हैं? Whatever we have अभी तक, we have one definition in our mind is whenever a number is of the form p by q, that number is a rational number. This is, we know. Whenever any number, if it is of the form p by q, where p and q are integers and q is non-zero, of course. So अब देखो rational numbers के भी सब parts क्या है? Rational numbers, it is a fraction, as I said, p by q की form का, और integers. Now see guys, integers आपके क्या होते हैं? -1, 1, 7, these all are your integers. अब मैं 7 को, how can I write 7? 7 is equals to 7 by 1. It is of the form p by q and q is non-zero. Okay, so every integer is a rational number. That's what I want to say is, fraction to you guys know कि it is a rational number, but every integer is also a rational number, or you can say is integers are a part of rational numbers. ठीक है, एक पार्ट है उसका. अब रैशनल नंबर्स में बहुत सारे हैं, बट इंटीजर्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. अब इंटीजर्स में सी negatives are also there and whole numbers. Why I have written whole numbers? See guys, 0, 1, 2 up to so on. I don't know why it is coming like this. Mine it is getting erased from automatically. Technology. Okay, now see, it is minus infinity, it is positive infinity. Now see, all the integers. अब मैंने integers में why I have written negatives? Because -1, -2, -3. And from 0, I have written whole numbers. Now what you can say is, whole numbers is a part of integers. Okay. Every whole number is an integer. Now, whole numbers means what? 0 and natural numbers. Natural numbers start from what? 1, 2, 3 up to so on. Okay, just one minute. Now,
Before moving on to rational numbers and irrational numbers, I'll just tell you quickly. We'll just tell you natural numbers, as I said, 1 2 3 4 up to so on infinity. Natural numbers are infinite. Smallest natural number is 1. Okay, this is the information. N has no largest element. As I said, they are infinite, so we don't know the largest natural number. Okay, N does not contain 0. 0 is a member of whole number. 0 is not a natural number. Okay, whole numbers, the only difference between whole numbers and natural numbers is natural numbers starts from 1 to till infinity, or whole numbers starts from 0, ठीक है, till infinity. Or you can say 0 belongs to whole number and 0 does not belongs to natural numbers. ठीक है, this is the way of representing a set. The same ways as we said, whole numbers are also infinite. Smallest element is 0. Largest member we don't know. ठीक है, every natural number is a whole number. एक चीज और याद रखना, every natural number, ये सारे natural numbers हैं, is a whole number, but every whole number is not a natural number, क्योंकि whole number में 0 भी होता है and it is not a natural number. vice versa मैंने बोला था. So these are the things. Same ways, integers में negatives are also there. 0 is also here. Positive numbers are also here. Integers में no decimals are there. Okay, no fraction part is there. Only singleton, like +1, +2, +3, -1, -2, -3, 0. Okay, so इसका neither we know the least वाला, neither it has the greatest, nor we know the least element. ठीक है, ये भी माइनस इन्फिनिटी है और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. एज आई सेड, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, देखो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ और इज द पार्ट ऑफ इंटीजर्स. दीज आर द थिंग्स. अब देखो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वाले इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो होते हैं, और नॉन पॉजिटिव मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 वाले जो नंबर्स होते हैं. तो इसलिए वी आर इंक्लूडिंग 0. अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होती है बात, दिस इज पॉजिटिव. और नॉन नेगेटिव बोले तो ग्रेटर देन और इक्वल टू. नॉन नेगेटिव के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी होता है, पॉजिटिव के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. नॉन पॉजिटिव के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नेगेटिव के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होने चाहिए. मतलब इक्वालिटी, यहां पे 0 ना होता तो हमारे पास ये नेगेटिव नंबर्स हो जाते. आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगर इक्वालिटी है तो नॉन नेगेटिव, हालांकि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही होता है, बट वहां पे हम नॉन नेगेटिव क्यों वर्ड यूज कर देते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 भी होता है. पॉजिटिव में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, हिडन वे में आप कह सकते हो पॉजिटिव है, बट नॉट एग्जैक्टली. रैशनल नंबर्स, एज आई सेड, रैशनल नंबर्स की अब वी आर गोइंग टू डू अ न्यू डेफिनेशन ऑल्सो. बट अभी तक हमें क्या डेफिनेशन पता है, whenever a number is there of the form p by q and q is non-zero, तो वो हमें पता है कि एक रैशनल नंबर होता है. लेकिन अब हम जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं, which is a new definition for you, is every rational number can be represented either a terminating decimal, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी, and a non-terminating repeating या recurring decimals. Now see what I am trying to say is rational number की एक और definition. अभी तक हमने p by q की फॉर्म वाली पढ़ रही है. Now this is a new definition and apt definition. Terminating decimal. Terminating का मतलब होता है stopping somewhere. तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो डेसिमल एक पॉइंट पे खत्म हो जाए. जैसे सपोज अगर मैं लिखती हूँ 4/5, इसको आप जब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 0.8 आ गया, खत्म हो गया डेसिमल, एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया ना. ठीक है, ये चलता तो नहीं जा रहा. अच्छा, अगर मैं एक लिखूं
आपका कोई भी एक नंबर ऐसा लिखो 22/7, 22/7 अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, 22/7 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ये कितना आ जाएगा 321, ये आ जाएगा 1.1031730. Now 4, 7 4s are 28, 20, 7 2s are 14, it will come out to be 60, 7 8s are 56, so I'm writing it over here, 40 हो जाएगा, ठीक है, और 7 5s are 35, so it will come out to be 50, 7 7s are 49, ठीक है. नाउ सी अगेन, यहां 10 से शुरू हो गया, फिर से ये क्या आ जाएगा 1730, फिर से हम इसको क्या लिख देंगे, वही का वही रिपीट होना, जैसे ये देखो एक पर 10 आया था और फिर से 10 आ गया, यही के नए नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो रिपीटेशन के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां पे बार लिख सकती हूँ, 3.142857 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद यही का यही नंबर आता जाएगा 142857, 142857, ठीक है, क्योंकि हर बार आप, तो सेम वेज इट विल कंटिन्यू. नाउ सी आई एम क्लेमिंग दैट इट इज अ रैशनल नंबर. व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ रैशनल नंबर? देखो दो डेफिनेशन है यहां पे, आइदर तो डेसिमल स्टॉप हो जाए, p बाय क्यू की फॉर्म का डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, or if it is not terminating, that means if it is not getting stop at some point, then it has to be recurring मतलब repeating, और बार हो जाए उसके ऊपर, ठीक है. सो दो डेफिनेशंस वी हैव डन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसी होनी चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए, रिपीटिंग मतलब रेकरिंग होनी चाहिए, ठीक है. सो दो डेफिनेशंस वी हैव डन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. Same ways if we will go with irrational numbers. Now, irrational numbers आप क्या कह दोगे, if it is not represented by this form, अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो आप यही कह देते हो. बट नाउ न्यू डेफिनेशन व्हाट वी विल डू इज, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और ना ही रिपीटिंग होनी चाहिए. दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. नाउ वी विल डू नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स ना ही खत्म हो एंड, और ना ही रिपीट हो रही हो. जैसे कि अगर आप देखो √2 लिखते हो, आप क्या लिखते हो 4.414 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा ये, ठीक है. √3 1.732 अप टू सो ऑन, आप देखोगे इसकी जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हो रहे होंगे वो रिपीट नहीं हो रहे. आप देखो √2 के बाद भी जो नंबर्स हो रहे होंगे वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है. सो ऐसे ही पाई इज एन लाइक 3.14 अप टू सो ऑन, आप ऐसे ही देखोगे पाई भी जो है इट इज एन इरेशनल नंबर. व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर? क्योंकि इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, ना ही खत्म हो रही होती है और ना ही रिपीट हो रही होती है. एंड वाला केस है ये. सो दिस इज द वे. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. As I said, mentioned pi, √2, √3, √5, all these are irrational numbers. Now see the sum of the totality, rational numbers को भी combine करके, irrational numbers को भी combine करके, what we will get, set of real numbers. So this is just finding rational numbers between two numbers and everything.